ದಶಕಂ 89 ವೃಕಾಸುರ ಕಥೆ ಭೃಗುಪರೀಕ್ಷಣವು. रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सम्बद्य सद्य स्तदिह मद कृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि तद काममखिलम् प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीयेच्युति कथा सद्य प्रसाद ऋषिदान् विधि शङ्करादीन् केचिद्विपो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बद कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं वृकासुर उदाहरणं किलास्मिन् शकुनिजसतु नारदमेकदा त्वरितदोषमपृच्छदधीश्वरम् स च दिदेशगिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु तपस्तप्त्वा घोरं स खलु कुपितसप्तमदिने शिरच्छित्वा सद्य पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अधिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नाथाद्वव्रे भवति विमुखानां क्वशुभधीः मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोऽथ रुद्रं दैत्यात् भीत्या स्म देवो दिशि दिशि वलदे पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्दमुद्वीक्ष्य शर्वम् दूरादेवाग्रदस्त्वं पडुवडुवपुषा तस्थिषे दानवाय भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीमङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकर सोपदच्छिन्नपादं भ्रंशोह्येवं परोपासितुरपि च गदिशूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसास्त्रिमूर्तिषु समाधिशन्नधिगसत्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरादुदितरुद्धरोषे विधौ हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजयाधृदे त्वामगाद सुप्तं रमाङ्गभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोत्थितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः निश्चित्य ते च सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमोक्षम् त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्वोच्चयैकतनुमेव वयं भजामः जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चित् परमरसनिर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुभवनिदा भाग्यनिवहं परितापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।